to our presentation. Can you give me a moment, please? Let me share something else. Mm, 1 second. 1 second. Please hold on. Huh? Okay, great. Actually, I forgot to connect my laptop, not laptop, my tablet to computer. Fine. Now, in previous session, we discussed about these three important things. Okay. फर्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट. यहाँ पे देखा था क्या कि भाई अगर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट इज सिंपली ए बी कॉस थीटा. और यहाँ पे देखा था कि भाई सेम अगर यूनिट वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड 1 है तो इनका प्रोडक्ट आ जाता है 0. अगर दो वेक्टर्स है यूनिट वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो इनका प्रोडक्ट आ जाता है 0. क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हुआ था? A bar cross B bar is equal to AB sin of theta और AN कैप. ये AN कैप याद है आपको कि अगर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है एंड इनसाइड दिस नॉर्मल सरफेस. सर. हाँ नॉर्मल. हाँ सही. If we do have A bar and B bar and they do have some angle theta in between them, so this AN cap is a normal vector to the plane. ये क्या चीज है? This is a plane. Okay, surface. AN cap is a perpendicular vector. Okay, to the plane which is containing both vectors A bar and B bar. तो याद रखो कि भाई डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा स्केलर क्वांटिटी आता है, वेयर एज क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आता है. We also have seen the Cartesian coordinate system or rectangular coordinate system. Okay, जहाँ पे we have seen कि भाई 3-dimensional geometry we do have x axis, we do have y axis and we do have z axis. We consider this cube geometry where we do have one point of the cube lying on the origin. यहाँ पे lie कर रहा है. Okay, and we named that कि a side which is along x axis its length is dx. Okay, तो इस लाइन को जो भी एज पैरेलल है उनकी लेंथ क्या हो गई? इन सब की लेंथ हो गई थी dx. Then we assume that okay the edge which is lying on or lying along y axis उसकी लेंथ है dy. तो edges which are parallel to this edge everyone do have length dy. Okay, then we have third edge which was lying along z axis. यहाँ पे तो ये z axis के along है, इसका लेंथ अज्यूम किया था dz and all the edges who are parallel to this edge do have the length dz. Then we have the exploded view of the cube. Okay, और वहां पे we applied a very simple sixth standard
अरिथमेटिक कि भाई एक रेक्टेंगल है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, दूसरा रेक्टेंगल है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, तीसरा रेक्टेंगल है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो इस रेक्टेंगल रेक्टेंगल के लिए सरफेस एरिया हो गया डी एक्स डी वाई, इसके लिए इस रेक्टेंगल के लिए हो गया डी एक्स डी जेड, इस रेक्टेंगल के लिए क्या हो गया dy dz. All are surface area. Okay. Now this surface area do have a perpendicular vector. Okay. az. तो यहाँ पे मैं az कैप लिख दूंगा कि भाई इस सरफेस को ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये वाले सरफेस को ay cap will be the perpendicular vector. For this surface ax will be the perpendicular vector. And we got the surfaces along with their perpendicular direction. Okay. Or volume of the cube is multiplication of the two sides, sorry, all three sides. Then therefore its volume is dx dy dz. और मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था कि भाई सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको सिर्फ लिख के लेना है. एंड आई गेव यू अ सिंपल फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क, which you have studied probably in 9th standard. Okay, we will discuss about that formula now. If let us say this is a circle and this circle got its center. Okay, so I can say that, okay, let us assume that this line represents the radius and it is denoted as r. Then I move this radius by some angle and I do have another position of the radius. Let this angle is very small angle d theta. Okay, so what we say that what is the length of this arc? We say that the length of this arc is r d theta. This is the top view. What I will say, this is the top view of the circle. अगर साइड में से थोड़ा सा tilted view देखते हैं तो what we will have, we will have a kind of this geometry. Here we have theta, this is r, so the length of this arc is r d theta. I will write down d theta. What do you mean by d theta over here? It is nothing but small change in angle. Okay, if I say that, okay, I want to find what is the value of actual theta, so I will go here, from here I will go and once again end up at the same point. So can I say that theta is from 0 degree to 360 degree? Am I right? So this complete circle is of 360 degree. Instead of representing in terms of degree, we will say that, okay, theta lies in between 0 to 2 pi. Okay, every time. So theta here it is called. So I will say that angle. Okay, because in spherical coordinate system we do have two angles theta and phi, and we in cylindrical coordinate system we do have angle only phi. We will see once again this later on. लेकिन समझ लो कि भाई ये सिर्फ नोटेशन फॉर एन एंगल है, इट इज जस्ट एन एंगल. तो ये जो साइड व्यू था, ओके, ये सिमिलर काइंड ऑफ व्यू है यहाँ पे, विच इज द टॉप सरफेस ऑफ द सिलेंडर. नाउ वी आर लुकिंग एट टॉप सरफेस ऑफ सिलेंडर. तो अगर मैं कहूँ कि भाई दिस इज द center axis of the cylinder. Okay, I will say axis of cylinder, and I will say that, okay, from this point I do have similar kind of geometry. यहाँ पे मैं लिखता हूँ d phi. Okay, ऐसे ही है, सेम है geometry. So if I ask you what is the length of this edge, assuming that assume
radius of cylinder is rho. क्या कहेंगे इसको? rho. One moment please. Okay. Now, if I say that, okay, the radius of the cylinder is rho, then the length of this arc will be rho d phi. And this is the notation which you might have observed while writing down the equations of cylinder. Okay. We will see those equations. Lots of geometries over here. First of all, what is this? This is, I guess, 1/4 part of the cylinder. Am I right? 1/8 part of the cylinder. This is a 3D view. Okay. So you can see same kind of geometry over here. Okay. And you can see, okay, there is an angle phi. Okay. So this small change in angle is d phi. Okay. So can I say that the length of this arc, therefore the length of this arc is nothing but rho d phi. Same thing which we discussed right now. Okay. So the length of these curvy lines, which are nothing but the length of arc, is rho d phi. यहाँ पे लिखा है rho d phi. Okay. Now, if you think about this line, this much line, these are very small lines right now. So please observe carefully. If you are observing, you are looking at mobile screens. So we are talking about this very small part of the segment. We know that starting from this line going to the surface of the cylinder, this complete is our radius. And we are talking about a very small part of the radius. So whenever we say that small part of any quantity, and here we are discussing about radius, small part of radius rho is called as d rho. तो ये जो चीज हो गई यहाँ पे, okay, this is our d rho. You didn't got it? Now let me change the color. बहुत किचिड़ मिचिड़ हो गया वहां पे, ब्लू है वहां पे ना. ओके, ग्रीन लेते हैं. Now if we talk about, ग्रीन भी नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है. If we talk about these vertical lines, okay, these vertical lines are parallel to the z-axis. Am I right? So this represents there is a change in the value along the z-axis. So vertical lines के लिए क्या लिखेंगे? dz. There is a change in value of the z-axis. अगर जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, सेम चीज इन इज गिवन ओवर हियर. ओके, जो यहाँ पे डिस्कस किया वही चीज यहाँ पे दी है. देखो, if we talk about this arc or this arc, okay, those are nothing but rho d phi जो यहाँ पे लिखा है. Okay, this is the vertical line, this is the vertical edge we were talking about, which is parallel to the z axis, इसलिए उसको dz लिख दिया. And these lines, the slanting lines, okay, these are nothing but along the radius, इसलिए इनको लिख दिया d rho. We are considering a very small amount of the complete radius. Okay, इसलिए लिखा d rho. अभी ऊपर वाला सरफेस ये आ गया, ये साइड वाला सरफेस ये वाला आ गया, और ये फ्रंट वाला सरफेस ये आ गया. ओके, अगर आप देखोगे ये जो सरफेस है, okay, this is a top surface, and we know that our z axis is coming outside from the top surface. So a unit vector which will be parallel to the z axis will be indicated as az. So for this top surface, a unit vector which is parallel to the z axis, is az. अगर यहाँ पे बात करते हो आप, एक मैं इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे.
Okay, this is the surface on the outer part of the cylinder. और उसके बाहर कौन आ रहा है? सिलेंडर के बाहर कौन आ रहा है? A vector which is in line with the radius. Okay, radius के along है वो चीज. So we do have a unit vector which is coming outside from the front surface and it is along the radius of the cylinder. इसके लिए उसको कहते हैं arrow. Okay, now ये जो P point है, इस P point को अगर आप इधर उधर मूव करते हो, it will be moved along the surface of the cylinder. तो ऐसे मूव होगा along the surface of the cylinder. Okay, ऐसे इरेज करना है, इनको भी मिटा देता हूँ, थोड़ा डायग्राम क्लियर हो जाएगी. Okay, this point P, we assume that okay, P is on surface. Okay, P is on surface of cylinder. तो ये along the surface of the cylinder move होने वाला point है. Okay, and this is nothing but, अगर आप P की shadow अगर देखोगे, okay, this dotted line is nothing but the shadow. Okay, ये है angle phi. Okay, और ये angle phi move होता है in this way. So we can say that angle phi moves along the surface of the cylinder. Therefore, for this point P, we have third direction which represent the direction along the surface and it is called as a phi. तो ये जो थर्ड वाला सरफेस है इसके लिए डायरेक्शन आ गई a phi. Okay, do remember that until and unless you talk with yourself and you talk with these diagrams, you won't understand these diagrams. You will understand these diagrams for a moment, the moment I am explaining you, and later on you will forget कि ये कैसे क्या आ गया. Okay, so we will talk about small lengths. Okay, so length. Okay, एक लेंथ है अपने पास dz, दूसरी लेंथ है अपने पास रो डी फाई और तीसरी लेंथ है डी रो. ओके, dz इज हैविंग, क्या कहते हैं उसको, az कैप डायरेक्शन. देन आर सॉरी रो डी फाई डू हैव डायरेक्शन. ओके, ये देखो ये है रो डी फाई, इट डू हैव अ डायरेक्शन अलोंग ए फाई. और ये डी रो विच इज नथिंग बट along your radius. Okay, so it will have the direction arrow. ठीक है, z के along है इसलिए z का डायरेक्शन, रेडियस के along है इसलिए रेडियस का डायरेक्शन. rho d phi, we got that quantity by changing the value of phi. Okay, so therefore it is just like this direction. Okay, in this direction, so therefore it do have the direction of a phi. Then we will talk about the surfaces. Okay, तो ये सरफेस हो गया. ओके, वी विल राइट डाउन फॉर दिस सरफेस. सरफेस एरिया क्या आएगा, रो डी फाई डी रो, and along it do have a z axis as a perpendicular axis. For this surface d rho dz, and it do have a direction vector as a phi. And for this surface we do have rho d phi dz and a direction vector as arrow. Okay, now if I talk about volume, okay, three elements कौन कौन से है, रो डी फाई डी रो और डी जेड, इन सब की मल्टीप्लीकेशन तो आ गया आपका वॉल्यूम. ओके, सो डी वी इज इक्वल टू रो डी रो डी फाई डी जेड. ओके, so this will be kind of difficult to visualize after looking at the complete side, what I have scratched everywhere. Okay, but if you go step by step, if you go with a step by step analysis of the diagrams, this is quite obvious. And the most important formula over here we used
is length of the arc, ये चीज. ओके, सो उसकी वजह से ये आया था रो डी रो. ओके, in cylindrical coordinate system, your point P is represented as these coordinates. P is represented by radius of the cylinder, angle with the x-axis. यहाँ पे देखिए ये phi कहाँ पे defined है, x-axis के साथ. Angle with the z-axis और उस angle with the x-axis और उसका z coordinate. ये point P यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे exactly? I will show you one small illustration for this. कहाँ पे गया browser? Okay, cylindrical. Let me refresh the web page. Okay. Now this is our three-dimensional coordinate geometry. Okay. I will click on show cylinder. So we do have a cylinder. Okay. छोटा बड़ा कर सकते हैं. Let me show the point. A आ गया radius of the cylinder. वो black दिख रहा है जो कम ज्यादा हो रहा है. This is the radius of the cylinder. यहाँ पे थीटा दिखाया गया है, but along with our assumptions, we consider the angle with the x-axis as phi. तो ये phi का कोण आपको दिख रहा होगा यहाँ पे. Okay. There may be a problem at your end due to streaming. Network कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है. Okay. Can I zoom into it? Let us see. Okay, fine. तो ये phi change हो रहा है. And now about the point. Let us go with the z axis. ये आ गया z axis. ये point P. Okay. This orange dot is point P. मैं उसको कम ज्यादा कर सकता हूँ. Okay. So you can see where exactly point P lies on the surface of the cylinder. Do remember that we are talking about the surface of the cylinder. Okay. So to define a point on the surface of the cylinder, we do require three important quantities. First, what is the radius of the cylinder? What is the angle with the x-axis? And what is its z position? What is its z position? तो ये important है to understand the cylindrical coordinate system, to क्या कहते हैं उसको, to specify the position of particular point on the surface of the cylinder. So do remember that. Let us go back to presentation mode. Do remember that first we applied length of arc. Okay. Second, we considered small amount of cylinder which looks like piece of cake. बराबर, जब केक कट करते हो तो उसमें से पीस निकालते हो ना बाहर, वही सेम ज्योमेट्री है यहाँ पे. थर्ड, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियस था डी रो. सरफेस के अलोंग जो आर्क था उसका लेंथ आ गया रो डी फाई. एंड लेट अस से क्या कहते हैं उसको, ओके, अलोंग जेड एक्सिस और पैरेलल टू द जेड एक्सिस जो भी एज थे, पैरेलल एजेस, उनका आ गया dz. ओके, ये इंपॉर्टेंट रखना है. अगर आपको सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह इनसे थोड़ा सा एलर्जी हो रहा होगा तो लुक एट योर पीस ऑफ केक. जो केक के टाइम आप कट करते हो ना बर्थडे के बाद, वही पीस है. ओके, सो यू डू हैव सिमिलर काइंड ऑफ ज्योमेट्री. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, why to study cylindrical.
सर वो कार्टेशियन तो समझ में आ गया, ये सिलेंड्रिकल पढ़ने की जरूरत क्या है? डू रिमेम्बर दैट वी डू हैव lots of current carrying wires. Okay, current carrying wires. और आपने अगर देखा होगा या फिर फील किया होगा, तो ये जो वायर्स है, लेट अस से इस वायर के थ्रू करंट जा रहा है आई, ओके, ये वायर है, तो इसके इर्द गिर्द आपको एक फील्ड मिलता है, जिसकी वजह से आपको कभी कभी शॉक भी लग सकता है. सो आई कैन से दैट along we do have a wire which is carrying a current I, it do have some sort of field around it, and it looks like a cylinder. It looks like a cylinder. इसके लिए to analyze the wires and their currents and their electric field and magnetic field, we will require a cylindrical geometry. Okay, same is the case with the spherical geometry. Spherical क्यों पढ़ना है कि if I say that I do have a point charge, it is going to radiate in all directions. Okay, so can I say that it will look like a sphere? It will look like a sphere. So therefore, to understand this kind of behavior in physics, in electrostatics and magnetostatics, where we do have radiative property in all directions, we have to study the spherical geometry. Okay. Now you can see over here, this is once again 1/8 part of the our quadrant 8 quadrant system. Okay. और या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जो जब आप पोहा खाते हो बाहर दुकान पे, तो वो छोटा सा स्लाइस दे देता है आपको, एकदम छोटा सा पीस ऑफ द लेमन. ओके, तो यू कैन कंसिडर दिस वन आल्सो. नाउ we are talking about a sphere, and very interesting thing is over here. Once again we are considering a point P on the surface. Do remember that on the surface of the sphere. इस स्पीयर की रेडियस क्या है? तो r है. ओके, स्पीयर की रेडियस क्या है? तो r है. अगर मैं इस पॉइंट P को नीचे प्रोजेक्ट करता हूं, नीचे प्रोजेक्ट करता हूं मतलब आई लुक एट द शैडो, तो ये जो एंगल बना एक्स एक्सिस के साथ, वो आ गया आपका फाई, और एंगल along with the z axis, in between the z axis and the radius joining the point P, it is called as theta. So in spherical coordinate system, P is represented as radius of the sphere, then theta, then phi. Theta क्या है? Angle between radius, I won't say exactly the radius, I will say line joining point P and origin, okay, and z axis. और ये phi क्या आ गया? Angle between x axis and projection of P on xy plane. प्रोजेक्शन मतलब क्या है? शैडो है उसकी, कि एक्स वाई प्लेन पे उसकी शैडो आ गई, तो ये जो लाइन बन गई आपकी, इस लाइन का एंगल अलोंग विद द एक्स एक्सिस. तो आप एक अज्यूम करो कि भाई आप गए मार्केट में, एक वाटरमेलन लिया, ओके, और वो दुकानदार करता है ना कि भाई एक छोटा सा ट्रायंगुलर पीस निकाल के बाहर में रख देता है. सो दैट छोटा सा ट्रायंगुलर पीस इज दिस. ओके, ये है छोटा सा और ट्रायंगुलर पीस जो दुकानदार सामने निकाल के रख देता है. ओके, सो फ्रॉम दैट पीस, this is the geometry we are looking at. Okay, we are looking at this geometry. Before going to this, let me show you one important discussion over here. I will draw a similar kind of, क्या कहते हैं उसको, diagram.
Okay, fine. Now what I will do, we do have point P. ये येलो दिख रहा है क्या आप लोगों को? प्लीज फीडबैक. येलो दिख रहा है क्या? येलो कलर. अभी अभी आया. नाही सर, बहुत सर कलर दिसतो सर, बट बरं, काय लिहिलंय ते नसेल दिसत. हा नाही नाही, दिसतोय सर दिसतोय. पण फोनने झूम केलं तर दिसतं सर. फोन मध्ये ना हा हा, झूम होतं त्याने झूम केलं की दिसतो सर. डॉट पी केलं. झूम नाही करत बरोबर त्याच्यामुळे. बरोबर. झूम केलं की दिसतं. Okay, okay, okay. Still, I will use the bright colors. Let us try those colors. तो तो ब्लू कलर सर, ब्लू ब्लू. बरं करूयात, ब्लू पण करूयात. हो सौरभ तुझंच ऐकणार सर. So we do have point P. We do have radius of the cylinder. इसका projection नीचे आ गया. Then we do have this projection, and this is angle phi, and this is angle theta. Okay. What is interesting thing, what I will do, I will draw a perpendicular from point P to the z axis. ये क्या चीज है? Perpendicular है, important. वो perpendicular है from point P to the z axis. Now I want to find what is the length of this side. कौन सी side? इस side की length क्या है? So tell me, we do have the right angle triangle, we do have angle theta, and we do have the hypotenuse as r. So can I say that this side has r sin theta value? अगर मैं right angle Yes. triangle था, yes, right angle triangle draw करता हूँ, ये theta है, so we can say that this opposite side, okay, this opposite side, let us say its value is x. So sin theta is equal to opposite side upon hypotenuse. Therefore opposite side का लेंथ क्या आ गया? x r sin theta. तो ये आ गया r sin theta. इसलिए ये भी क्या आ गया? r sin theta. क्योंकि दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है. Okay. Now this was a point P. This was a point P on the surface of the cylinder. इसको मैं एक कट मारता हूँ वाटरमेलन की तरह. एक वर्टिकल कट मार दिया, एक हॉरिजॉन्टल कट मार दिया. अगेन वन वर्टिकल कट एंड एक हॉरिजॉन्टल कट. तो ये मुझे सरफेस का टुकड़ा मिल गया. सो गो बैक टू डिफरेंशियल वॉल्यूम ओवर हियर. ये वही सरफेस है जो मैंने अभी कट मार के तैयार किया है वाटरमेलन को. एंड दिस इज द वो रेड वाला कलर का पार्ट वाटरमेलन के अंदर का, ये जो है ना पूरा. So this surface is a green surface of the watermelon and rest of the things is red part of the watermelon. So did you get the geometry of the spherical quantity, spherical coordinate system? Okay. Did you get? Yes or no? Yes sir. Yes, sir. sir. Yes. Probably most of you might have understood the geometry and its example, watermelon ka example. Okay, you may relate those things. So we do have various surfaces. First surface, okay, जहां पे आपका रेडियस अंदर से बाहर आ रहा है. ओके, तो आपको है यूनिट वेक्टर along the radius of the sphere, along the radius of the sphere. Then ये जो साइड वाला सरफेस है आपका, ये वाला, ओके, ये वाला सरफेस, तो ये वाला हो गया यहाँ पे. ओके, तो ये हो गया एफ आई. ओके, जो मैंने कहा था कि भाई जब मैं आई एम कटिंग डाउन द वाटरमेलन इन दिस वे, so I am cutting down it along the surface, so I can say that I am cutting down along the phi direction. So इस सरफेस के लिए आ गया ये ए फाई डायरेक्शन. और ये जो वर्टिकल कट मैंने मारा था, वर्टिकल कट, तो कैन आई से दैट दिस इज एंगल थीटा. आई एम चेंजिंग द एंगल थीटा. वर्टिकल कट के लिए एंगल थीटा चेंज कर रहा हूँ. सो इस सरफेस के लिए आ गया यूनिट वेक्टर अलोंग द ए थीटा डायरेक्शन. ओके, so let me show you one important thing over here. Once again we will go to website where we do have another illustration. एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ. Okay,
Now I can say that we do have a very beautiful sphere over here and we can change its radius. Okay. ये जो तीन arrow निकल रहे हैं. Now look at the red arrow, which is nothing but along the radius of the sphere. ये जो blue arrow है, which is nothing but your phi value. Okay. ये जो x axis पे गए, तब phi का value हो गया 0. We are talking about this blue arrow. हाँ? अगर मैं phi change करता हूँ, तो it is traveling along the surface, गोल 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 घुमा, and once again comes back to your x-axis. तो ये blue trajectory दिख रही होगी आपको. So we have traveled 360 degrees, means 2 pi. Okay. So I will reduce the phi value. Okay. और theta की value, theta कब change हो रहा है? When we are changing the angle along with the z-axis. वो जो red है ना, that is, sorry, जो green है, green vector है, that represents the a theta direction, and angle we are observing is along in between z-axis and this red radius. Okay. उन दोनों का angle change करते हैं तो a theta भी change होता है. Okay. So you might have got the direction vector, green color direction vector. We are changing the angle in between the radius line and the z-axis. Okay. तो ये हो गए तीनों वेक्टर्स. ठीक है, समझ में आ गया वो सारी चीजें कि कैसे दिख रहा है, क्या दिख रहा है. एंड वॉल्यूम एलिमेंट, हाँ, द वॉल्यूम एलिमेंट वी हैव कंसीडर वाज दिस. ओके, एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट जिसको आप बड़ा छोटा कर सकते हो. ओके, वी आर चेंजिंग द रेडियस, इसलिए वो रेडियस के अंदर बाहर स्फीयर के अंदर बाहर कर रहा है. Then we are changing the theta. You can observe we are changing the vertical cut to the watermelon. Okay, theta change कर रहे हैं. And if we change the phi, we are actually changing the horizontal cut to the watermelon. Okay, so this kind of illustration will help you. I will post few of the animation video links to our channel, and you can go through those links. Okay, एक बार देख लेना, animation देखने में बहुत अच्छा लगता है, and we do have more understanding through the animations. So we do have few of the lanes. Oops, sorry. We do have lanes, then we do have surfaces, and we do have volume. Okay. Along the radius we do have dr. Along the theta, ये जो vertical cut था, ये कब मिला? जब थीटा चेंज किया. once again it is length of the arc. okay, और ये horizontal cut कब मिला? ये वाला horizontal cut when we moved this point P like in this direction. okay, अभी मुझे बताओ, ये था r sin theta. okay, and this is the angle phi. so r sin theta, angle phi, and a cut. so therefore we do have r sin theta and there is a change in phi, d phi, क्योंकि ये ऐसे है. okay, so we are changing the angle phi, so therefore d phi. इसकी लेंथ थी या फिर इसकी लेंथ थी r sin theta, therefore r sin theta. surfaces, you know, multiplication of the two sides will give you surface, and volume, multiplication of the all three sides. okay, so can I say that one side to second side and third side, and if I multiply all of them, then we do have r square r dr d theta d phi. This is the volume quantity. okay, now today you are going to once again look into your assignment 1 and try to analyze whether you have understood the meaning of r sin theta from the heck where it came into the picture, then r d theta and r d phi in the cylindrical coordinate system. Once you go through those equations and try to digest those equations. okay, even if you are not able to digest those equations, in the end you have to mug them up. But mugging up the equations, I won't suggest that one. okay, so everyone please go through once again assignment number 1 and see that you understand the equations now. okay, so I can say that that's all for today's session, and we have covered the Cartesian coordinate system, cylindrical coordinate system, and spherical coordinate system. Meanwhile, I will post some of the YouTube videos. They do have some
video animations that will help you to understand these all things. Okay. So what I will do, I will go back to my meeting and I will download the attendance first. Today is 10/8/2020 PM. Okay. And I will stop the recording.